बोलो क्या हाल चाल। हेलो राजीव कैसे भाई, याद आ गई? पीएसयू करते थे सब तो मैंने इतनी मेहनत करी, गेट क्रैक किया और पीएसयू ज्वाइन किया। अभी वेस्ट बंगाल में सिटी से दूर फंसा हुआ हूँ। दिन भर काम देखता हूँ, फिर यहाँ चार बंदे नहीं होते बात करने को। वही रटा रटाया मोनोटोनस वर्क है, कोई नई लर्निंग ही नहीं है। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट बस घर जाने में मिलता है छुट्टी लेके। अब क्या करूँ राजीव भाई, मेरी जिंदगी भंवर में फंस गई है। हेलो। हाँ भाई, तुम बताओ क्या हुआ। राजवीर ब्रो, मैंने वेलएसआई जॉब तो ज्वाइन कर ली। कॉलेज प्रोजेक्ट एंड फंडामेंटल स्ट्रांग थे तो मिल भी गई जॉब, लेकिन एक्चुअल जॉब तो मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मेरे सपने में भी डिजिटल डिजाइन और वेरीलॉग का कोड घूम रहा है। हर दिन नया पढ़ो नया बनाओ, व्हाइल आई विश्ड फॉर रिलैक्स लाइफ जहाँ सुकून ही सुकून हो। बस भले सेम काम जिंदगी भर करना पड़े, अब क्या करूँ। अब इनसे तो गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि यही गलती आप सबसे भी हो। बिकॉज अ जॉब इज समथिंग दैट विल रिक्वायर योर टाइम, एनर्जी एंड स्किल्स. If it is not as per your personality, then it will lead to the problems. You will earn the money but would never be happy. So let us compare PSU jobs and VLSI jobs over various important factors, and I am sure it will help you to conclude. Entry, work life, salary, stability, leaves, flexibility, office politics and culture are the most important factors to judge a job based on your personality. If I talk about entry in either of these jobs, both are equally hard. PSU के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी है और VLSI के लिए भी. You have to do a lot of reading, projects and compete with top talent of India. PSU जॉब का मतलब है you will go through training for initial some months and same kind of repetitive work would be there throughout your life. Once in a 10 to 15 years, PSUs may go through big technological advancements. Other than that, mostly kind of work remains same. आपको बस ऑफिस टाइम पे जॉब करनी है and once that is over, there is no tension of work, not even 1%. So rest of the time is purely for yourself. While in VLSI, logic building is there, coding is there, documentation is there, design should be perfect, optimized and properly tested. And all these things require your analytical skills, lot of thinking and time. You have to put your time to do the job. And the most important thing, when you are designing something in VLSI, the work is not over with the office. आप कितना भी सोच लो बट आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम घूमेगी ही इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स. You will keep thinking how to solve it. So if the same thing is enjoyment for you, like this much hustle, then go for VLSI. And if you don't want this type of life, then do not choose VLSI. एक चीज़ और, VLSI में भी मतलब ये ऑफिस आवर्स के बाद साल भर कॉन्स्टेंटली काम नहीं रहेगा, बट हाँ लेट सपोज आपको 200 दिन साल में काम करना है तो 60 डेज लाइक अराउंड 30% ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. एंड द थर्ड फैक्टर इज सैलरी एंड ग्रोथ. एंड इफ आई टॉक अबाउट PSU सैलरीज, देन यू विल बी गेटिंग अराउंड 90,000 to 1 lakh per month in hand salary, and there will be few more perks as well. While VLSI job, including joining bonus, would get you 1.1 lakh plus per month in hand salary along with some other perks like health insurance, term insurance, food coupons, etc. अगर ये टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की VLSI जॉब है, इन दैट केस इन हैंड सैलरी से मेरा मतलब ये है कि मैंने प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एंड इनकम टैक्स हटा दिया है. इन हैंड सैलरी एक्सक्लूड्स द प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स. और अगर VLSI कंपनी सर्विस बेस्ड है तो आप 35,000 to 70,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ कंपनी यू आर वर्किंग, व्हाट इज योर स्किल्स एंड व्हाट वाज योर एकेडमिक बैकग्राउंड. और सैलरी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है वो है ग्रोथ. सो ग्रोथ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और PSUs इज यूजुअली 5 to 10%, while VLSI job on average get 50% plus yearly growth in salary. And if someone is exceptional, then he can get 25% plus growth as well. The next factor is stability. So stability in government job is always more, because in private your work and hunger for learning would remain you in job. While in government job, अगर आपने एक टाइम पे सही परफॉर्मेंस नहीं भी दी तब भी कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप कुछ बहुत बड़ा ही कांड ना कर दें. So your government job would be mostly stable even if you don't perform well. While in VLSI job, that's not the case.
This is research field and you have to constantly perform. So VLSI job stability would be purely driven by your performance. And the next factor is leaves. Proper leaves are required to make your life easy. PSUs usually comes with 30 earned leave, 12 casual leave, 30 special authorized leave and various other holidays on festival, and there are few more type of leaves as well, as discussed with my friends. The point is they have so many leaves. Using leaves you can plan for the holidays, and once you are on leave you are actually on leave. Because there is no flexibility to work out of office in PSU. And if I talk about VLSI, here also you will get 18 earned leaves usually and around 36 or casual leaves. Along with that weekends are off and 10 गवर्नमेंट ऑथराइज लीव्स जो यूजुअली दीपावली होली की छुट्टियां होती हैं वो टोटल 10 मिलती हैं प्राइवेट में. but VLSI comes with flexibility to work from anywhere and leaves Can be a working day as well if something urgent comes. It's not always the case, but फिर वही बात करूंगा मैं. सपोज आपने लीव ली है, आप लैपटॉप पे काम कर ही सकते हैं, आप खाली बैठे हैं, आपको पता है कि आपकी डेडलाइन 2 दिन बाद की है, तो इवन आफ्टर यूर लीव आपका मन करेगा कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं. बिकॉज देर इज अ ऑप्शन टू वर्क. There is a flexibility. So flexibility is a two-way sword. It can be beneficial as well. It can make you work more as well. और इस पॉइंट के साथ हमारा लीव्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे डिस्कशन पूरा होता है. final factor is office politics and culture. This is also human nature to do politics, but MNCs run on some fixed processes. So it's very rare or very less probable that your career can be ruined or impacted by office politics only. While government jobs or PSUs may have major impact on your career growth due to office politics. Senior behavior can also be rude or not that much well maintained in government jobs or PSUs, Because वहाँ पे ऐसे कुछ कल्चर को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस नहीं बनाई जाती हैं. and neither teamwork is that much required there. While in VLSI or big MNCs, there are proper guidelines to maintain the good culture, maintain the office decorum. So usually you would get good culture in VLSI. Although work related pressure would come and may lead to burnouts, but mostly managers handle that thing ethically and efficiently. One or two exceptions can be there throughout the industry, but my overall experience has been good, in fact very good in VLSI industry. Colleagues are friendly in nature, behaves well, seniors help once that is required. So yes, my experience is really good in VLSI industry in last 3 years. Now evaluate your personality based on the factors discussed in this video and find out the best job title for you, whether you are for PSU or you are made for VLSI or something else. Your career, your approach and decision should be yours. Take information from everywhere and decide as per your personality. That's it for the video. Thanks for watching.